अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी दाल गोश्त। इसे हम लोग सागबरी दाल भी बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में बना लेते हैं। पहले दाल के साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके इसको बॉईल कर लेते हैं। तो प्रेशर पैन में हाफ कप तुवर दाल और हाफ कप चना दाल मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए वॉश करके सोक करने के लिए रख लिया था। Also add 2 onions sliced, 2 green chillies, 2 tomatoes chopped, थोड़े से coriander leaves, 8 to 10 cloves of garlic or 1 tablespoon of garlic paste, 1 tablespoon roasted zeera methi। इसका रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 teaspoons of chilli powder, half teaspoon haldi, 1 teaspoon salt, 250 to 500 grams of mutton। मैंने 250 डाला है, बट यू कैन ऐड अप टू 500 grams ऑफ मटन विथ बोन, और 2 ग्लास पानी। इन सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड देन क्लोज द लिड एंड प्रेशर कुक फॉर 4 whistles। 1 whistle on high and the rest on medium flame। While it's cooking, soak a small bowl of tamarind in warm water। It's 4 whistles now। Let the pressure cooker cool down on its own. Open the lid. Now remove the mutton pieces to a plate and blend the rest of the ingredients। You can blend the ingredients in 3 ways। One is by using a dal घोटनी, दूसरा मिक्सी एंड तीसरा हैंड ब्लेंडर। अब देयर इज़ नो पावर इन द हाउस, सो आई बी यूजिंग द पोटैटो मैशर। इसमें ब्लेंडर या फिर मिक्सी जैसा इतना स्मूथ कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा, बट विद द पोटैटो मैशर और द दाल घोटनी द कंसिस्टेंसी इज़ गुड इनफ। जितना मैक्सिमम हो सकता है हाथ से कर लो। इरादा बना लिया था दाल गोश्त बनाने का, सो वेदर द पावर इज़ देयर और नॉट, बननी है। The dal and the rest of the ingredients are nicely mashed. Now let's add back the mutton pieces into the gravy. Also add half a cup of tamarind water। Mix everything together very well and let the dal come to a boil. Till it comes to a boil, let's get the seasoning ready. Keep a small pan, add 1 to 2 tablespoons of oil। When the oil becomes hot, add half a teaspoon of mustard seeds। Once the mustard seeds splutter, add half an onion sliced finely। Along with that, add 2 to 3 dry red chillies and curry leaves। Saute till the onions turn light brown। Once done, add that to the dal, cover and let it rest till it's time to serve। खट्टी दाल गोश्त या फिर सागबरी दाल is now ready to serve। It's very yummy। Do try it out। Like, share and subscribe। Ingredients as always mentioned in the description box। Thank you for watching।